बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग एकदम मज़े में होंगे और आप लोग वेट कर रहे हैं न्यू टॉपिक का। तो गेस कीजिए आज का टॉपिक क्या है? राइट बच्चों, टुडेज टॉपिक इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यस, आज हम रोटेशन के बारे में जानेंगे, रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, कैसे दोनों फेजेस अर्थ कंप्लीट करते हैं। राइट, सो वी हैव सम लर्निंग पॉइंट्स, rotation of the earth and revolution of the earth. Let's proceed further bachcho. The earth has two types of motions. One is namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis and the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. तो आपने difference जाना दोनों में, है ना? So जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं जो धरती, उस ऑर्बिट पे या फिक्स्ड पाथ पे उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, और जो रोटेट करती है धरती उसके एक्सिस पे उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। These motions of the earth have far-reaching effects of explained as under. Rotation of the earth. The axis of the earth is slightly inclined and in fact it is tilted by an angle of 23.5 degree from the perpendicular of its orbital plane, and in other words the earth makes an angle of 66.5 degree with its plane. It spins on its axis like a टॉय टॉप, जैसे आप छोटे सा गोला घुमाते हो ना, वो लट्टू जो आप बोलते हो, वैसे ही इसके एक्सिस पे घूमती है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. It makes one complete rotation on its axis in about 24 hours. आपको पता है धरती को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं. This diurnal motion of the earth causes day and night, and we often see the sun rising in the east in the morning and reaching high in the sky at midday and setting in the west in the evening. आप देखो सूरज तो आपका पूर्व से उदय हुआ, फिर बहुत ऊंचा चला गया, आफ्टरनून तक ये बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, आई मीन हाइट पे जो हो जाता है, और उसके बाद ये अस्त हो जाता है वेस्ट में जाके. दिस गिव्स अस अ रॉन्ग इम्प्रेशन दैट सन इज मूविंग while the earth is fixed. नहीं, सन, इस धरती लाइक उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सन मूव नहीं होता है. द फैक्ट इज अदरवाइज इट इज द अर्थ दैट मूव्स एंड द सन इज फिक्स्ड. We can better understand this phenomena with the example of a moving train. When the train moves, we see trees, electric poles and buildings moving in opposite direction, but in fact they are fixed. एंड इट इज़ ट्रेन दैट मूव्स. हमें लगता है ना कि सब भाग रहे हैं, पेड़ भी भाग रहे हैं हमारे साथ, सूरज, धरती सब भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. हमारी ट्रेन चल रही होती है और सब फिक्स होते हैं. डे एंड नाइट वी नो दैट द अर्थ हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, है ना, एंड इट इल्यूमिनेट्स फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन. The earth being spherical in shape does not get the light of the sun on all its parts at the same time. अब धरती की अपनी तो कोई रोशनी नहीं है, ये किससे रोशनी लेती है? सूरज से. अब ये गोल स्फेरिकल शेप में होने के कारण इसके दोनों तरफ, हर तरफ तो इसके लाइट नहीं आ सकती. So in order to understand the phenomena of the day and night, let us make an experiment. Take a globe and a torch and keep both in a line or on a table. ठीक है, ग्लोब को ले लीजिए और टॉर्च ले लीजिए और एक लाइन में दोनों को रखिए और टेबल पर. नाउ स्विच ऑन द टॉर्च एंड ग्लो ऑफ द लाइट फ्रॉम द टॉर्च विच विल illuminate the side of the globe which faces the torch while the other side of the globe remains dark. तो जिस साइड पे लाइट पड़ रही है वही सिर्फ, वहाँ सिर्फ रोशनी है, बाकी तो अंधेरा है उस दूसरी तरफ. The illuminated side of the globe represents day and dark side is night. तो इसी तरह जहाँ रोशनी है वहाँ दिन और दूसरी जगह रात. Now rotate the globe slowly. You will see that different parts of the globe are illuminated turn by turn. Now consider the earth as the globe and the sun as torch. What do you infer from it? Every part of the earth gets light of the sun turn by turn, and this part of the earth that faces the sun experiences day, and while the part away from the sun remains in dark and has night. पता चला आपको दिन रात कैसे होते हैं? Did you know the ancient Indian astronomer Aryabhat had started that the earth is round and rotates on its axis? पता था क्या आपको?
Okay, now different times of the day. The sun rays are slanting in the morning and evening. The slanting rays fall on a larger area of the earth's surface and as such there is lesser heat during these times. आपको पता है सुबह और शाम को ठंड मतलब कम गर्मी होती है. At midday, the sun's rays are almost vertical. Vertical shape में ये गिरती हैं और इस तरह क्या होता है, falling on a smaller area, thus giving more heat. तब इसलिए आफ्टरनून में जो नून टाइम है उसमें हमारी गर्म ज़्यादा होता है. Between sunrise and midnight, we experience it different times of the day mentioned as under dawn. Before the sunrise, we find diffuse light is called the dawn. Sunrise, the sun appears in the east horizon with slanting rays. Noon, the sun rays continue to climb up in the sky, falling almost vertically at noon. Sunset, in the afternoon, the sun appears to descend to the west horizon and then sets. Dusk, sunset is followed by a short period of diffused light called the dusk. Midnight, when the earlier illuminated part of the earth moves farthest from the sun, it experiences midnight. What would happen if the earth did not rotate? सोचिए क्या होगा अगर धरती घूमना बंद कर दे. The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. अगर घूमेगी नहीं तो जो साइड पे रोशनी है हमेशा के लिए दिन ही रहेगा वहाँ पे, है ना, और दूसरी साइड पे इतना ठंडा फ्रीज हो जाएगा वो तो. सो धरती का घूमना बहुत ज़रूरी है, रोटेट करना बहुत ज़रूरी है. थिंकिंग शॉर्ट, हाउ डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ हेल्प इन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ ऑन अर्थ? Revolution of the earth has another motion, that is revolution, which is an annual motion. The earth simultaneously rotates on its axis and revolves around the sun west to east. It completes one revolution in about 365 days and 6 hours, called a year. A normal calendar year has 365 days. The remaining time is added every 4th year to make a leap year, which has 366 days. The extra day is added in the month of February, which has 29 days in a leap year. A leap year is divisible by 4, तो उसको 4 से divide करेंगे आप. The year 2024 is a leap year क्योंकि ये divide हो जाता है 4 से. The next year would be in 2028 क्योंकि 4 साल के gap के बाद आता है ये. The revolution of the earth and the inclination of its axis have two effects. One is varying lengths of days and nights and cycle of seasons. Varying lengths of the days and nights due to the inclination of the axis during the earth's revolution around the sun. The poles are also tilted towards the sun turn by turn. For 6 months, when the northern hemisphere faces the sun, it receives more sunlight than the southern hemisphere, and the north pole receives perpetual daylight during this time, and while the south pole remains enveloped. The north pole receives perpetual daylight during this time, while the south pole remains enveloped in dark. As a result, the days are longer in the northern hemisphere while the nights are shorter. On the contrary, when the southern hemisphere is tilted towards the sun during the other half of the year, it experiences longer days and shorter nights. On June 21st, the sun shines vertically on the Tropic of Cancer as we move away from the equator, and the length of the day increases towards the North Pole. In fact, the region beyond the Arctic circles receives continuous daylight for 24 hours, and therefore this region is called the land of the midnight sun. At the North Pole, there is a continuous daylight, though dim, for full 6 months. At this time, the length of the day decreases with latitude in the southern hemisphere, and the region beyond the Antarctic circle remains in perpetual darkness for 6 months. The North Pole at this time has a night of 24 hours. Above situation reverses on December 22nd, when the sun's rays fall vertically on the Tropic of the Capricorn, and resultantly days become longer and nights become shorter. तो
रातें छोटे हो जाती है और दिन बड़े हो जाते हैं इस टाइम पे, विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एट दिस टाइम डेज आर शॉर्टर, दिन छोटे, एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। During the equinoxes, March 21st and September 23rd, the sun is overhead along the equator. There are equal days and nights all over the world. So यह diagram आप changing of seasons देख सकते हैं. Revolution of the earth. The earth has another motion, that is revolution, which is an annual motion. The earth simultaneously rotates on its axis and revolves around the sun west to east. It completes one revolution in about 365 days and 6 hours, which is called a year. A normal calendar year has 365 days. The remaining time is added every 4th year to make a leap year, which has 366 days. There are 4 principal positions of the earth with respect to the sun. Number 1 is summer solstice. On June 21st, the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, 23.5 north. Now the northern hemisphere is tilted towards the sun. The sunlight is available for the maximum hours in the hemisphere. It is called summer solstice and it is summertime in the northern hemisphere. The southern hemisphere, on the other hand, experiences winter at this time. Winter solstice, this is on December 22nd. The sun shines vertically over the Tropic of Capricorn, 23.5 south, and the southern hemisphere is called the winter solstice. This is the summertime in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. Spring equinox. On March 21st, the sun shines vertically over the equator. Days and nights are equal in the world. इस टाइम पे रात और दिन पूरे संसार में एक जैसे होते हैं. Equinox literally means equal days and night. Spring seasons prevails in the northern hemisphere while the southern hemisphere has autumn season. Autumnal equinox. On September 23rd, also the sun shines vertically over the equator. The autumn season prevails in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. It is clear from the above description that the seasons are opposite in the northern and the southern hemispheres. When it is summer in India, in northern hemisphere it will be winter in Australia, in southern hemisphere. सो बच्चों, आई होप आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा और अभी कुछ एक्सरसाइजेस आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं. चलिए एक बार उन्हें देख लेते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. एज यूजुअल आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है. फिल इन द ब्लैंक. सेकेंड एक्सरसाइज में आपको ब्लैंक को फिल करना है. इस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करिए अपने चैप्टर में और फिल द ब्लैंक. राइट, ट्रू और फॉल्स. इसमें से कुछ स्टेटमेंट आपको गलत मिलेंगी, उनके लिए आप फॉल्स स्टेटमेंट रखें और अदरवाइज आप ट्रू लिखें. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको शॉर्ट में देना है बच्चों. 3-4 लाइन्स में आप आंसर लिख सकते हैं. क्विक रिस्पॉन्स इन स्किल्स इनरिचमेंट जोन बेस्ड ऑन द टर्म्स लर्नड इन द लेसन. सर्कल द फॉलोइंग टर्म्स डायगोनली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. तो आप इसे करें. एंड मैप वर्क में आप कर सकते हैं. कंसल्ट एन एटलस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज हैविंग समर व्हेन इट इज़ विंटर इन इंडिया. आउट ऑफ द बॉक्स जाना है तो आप क्या करेंगे. व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग एंड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट coincide with the earth's axis and why? And while doing this, have fun बच्चों, enjoy.